Hello guys, we are discuss about equation. जे थिन वीडियो में असी जेके इंपॉर्टेंट इक्वेशन आहिनि उहे ॿुधाईंदासीं। ही इंपॉर्टेंट आहे, ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट आहे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एक्सेलेरेशन is equal to change in velocity upon time. The definition of acceleration: displacement is equal to initial velocity and delta t time plus 1 up 80 delta t square. Using this formula when you don't have final velocity, जेकर आप final velocity न हो, displacement is equal to final velocity and delta t is minus 1 half a and delta t square. Final velocity square is equal to initial velocity square plus 2a delta t. Final velocity uf is equal to final velocity and ui is equal to initial velocity, a acceleration and delta x displacement. हाणे डायनामिक जेके इक्वेशन उहे ईंदियूं। डायनामिक मोशन कीअं थो थिए, मोशन जो काज़, मोशन जो सबब। फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एफ रिप्रेजेंट फोर्स, एम रिप्रेजेंट मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। न्यूटन जो सेकंड लॉ है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए जी। डब्ल्यू रिप्रेजेंट वेट, एम रिप्रेजेंट मास एंड जी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी न्यूटन जो सेकंड लॉ है। फ्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ यार इतने छा लिखियल हूंदो। हाँ, फ्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन and into normal force. Momentum P is equal to mv. P represent movement and m represent mass and u v represent velocity. Delta P is equal to F delta T. Delta P is change and movement at F applied force and delta T is time. F is equal to W is equal to FD cos theta. W is work, F force, D displacement and angle between force and the direction of motion and F parallel force. Kinetic energy is equal to 1 half mv square. Ke is equal to represent kinetic energy and m represent mass and v represent velocity. Potential energy is equal to mg height, mgh. P represent potential energy, m represent mass, g represent acceleration due to gravity, h represent height. इन्हें में ही इक्वेशन कमजिया है, ही भी इक्वेशन कमजिया है। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। यह भी इक्वेशन है।
Energy is equal to kinetic energy plus potential energy. E is total energy, kinetic energy and potential energy. Power is equal to W upon delta T. दोस्तों इनके पावर चयो वेंदो आहे पर ही असल में पावर आहे, हे पावर ना आहे, हिनखे रिप्रेज़ेंट चयो वेंदो पावर आहे। तव्हां यूट्यूब ते सर्च करे ॾिसंदो तव्हांखे मिलंदो पावर, ही पावर ना आहे। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डेल्टा टी। P represent power and W represent work and delta T is equal to time. Centripetal acceleration. AC is equal to V square upon R. AC represent centripetal acceleration, V is velocity and R is radius. Centripetal force. FC is equal to mv square upon R. FC is equal to centripetal force, m is equal to mass and v is equal to velocity, R is the radius. दोस्तों वरी भी वीडियो में असीं इक्वेशनूं वधीक डिस्कस कंदासीं। खुदा हाफ़िज़।